Hey guys, this is Shadow XCU this side and I trade ICT concepts. So, coming forward on the day, starting the day, क्या देखेंगे हम सबसे पहले डेली में हम प्रीवियस डे हाइज एंड लोज मार्क करेंगे. Then we switch to 4 hours. We see the structure. इसको डिलीट ही कर देते हैं यार. यहाँ पे हम देखेंगे एक 4 आवर का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप. We switch to 1 hour. So, 1 घंटे में हमको क्या दिख रहा है? 1 घंटे में यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश, and we can see a good rejection from the 1 hour fair value gap. So as you can see यहाँ पे liquidity sweep हुआ है. उसके बाद we get a fair value gap, we get a bounce back, so we can target the previous day high today. इसको हम target कर सकते हैं coming into the day. So now I'll switch back 15 minutes and we see a fair value gap right here. This is a 15-minute. So if this inverses, then we can target 4342, 4346, and maybe even the previous day. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इक्वल हाइज रेस्टिंग है, यहाँ पे हाई है. So maybe this is what we can target, this whole range. But we have to see how does the price react to this fair value gap. If it gets inversed, then we can play it to the upper side. If we get a good reaction of it, maybe we can expect a second bump into this 15-hour fair value gap right here. So let's see, and there is even a small fair value gap right here. So let's see how the price reacts. We have got like one reaction of it. Now we can maybe wait for the second one. Let's see, 5 minute has something to offer. So 5 minute में तो we have almost inversed this fair value gap. Let's see, there is one fair value gap right here. But 5 minute में हमारे को एक inverse यहाँ पे भी अच्छा मिला है. I would like to see this 15-minute inverse, and then I can like find a way to get a position, an entry to target these equal highs, sort of a trend line liquidity resting. क्योंकि नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे आके इसने यहाँ पे liquidity sweep करा, यहाँ से we get a good push, we come back to discount, and then we can target the upper highs again. उसके बाद 4 आवर का है तो then the structure will be bearish only, कि यहाँ से ये हमारे को मिलता है यूं maybe यूं, और यहाँ से हम फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली में हम देखेंगे तो डेली में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी रेस्टिंग है. ये हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप है. So of course it will be respected. And where is the price heading? So यहाँ से जब प्राइस आता है we can target this low over here.
क्योंकि एक्सट्रीमली बेयरिश है, सो दिस कैन बी द नेक्स्ट लॉन्ग टाइम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट टुडे. अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर ही पहले क्लियर करेंगे, प्रीवियस डे हाईज उड़ाएंगे, और उसके बाद मे बी हमारे को एक चाल नीचे के लिए बनेगी. वी हैव 5 minutes to this 15 minutes candle closure, so let's see what the market offers us. Guys, as you can see, maybe I was waiting for a second retest into this 15-minute fair value gap, but प्री मार्केट में आज हमारे को ऊपर का ही इम्पल्स मिल गया, and this liquidity right here has been taken, so we know that bullish structure is being respected, so that's good. Now we'll be targeting these equal highs, and it is a very impulse move, so let's see कि हमको कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है. What will I do? Maybe I'll see the 5 minute structure. uh, yeah, I'll just maybe continue. Depends on the wick actually. अगर यहाँ पे हमको एक पूरा स्ट्रॉन्ग विक देखने को मिलता है तो मे बी प्राइस यहाँ पे एक बारी बम्प होके फिर ऊपर चल सकता है. बट इफ़ वी सी अ गुड 5 minute फेयर वैल्यू गैप अराउंड दिस एरिया, और ये लिक्विडिटी अभी टेक ओवर नहीं हुई है, then we can target these highs. So that will be our entry for the day. So let's see what happens. But यहाँ पे ये clear नहीं हुआ है हमारा. So this is the reason the previous day high is the reason I am still waiting कि भाई I want this to be taken out first. So let's see what is the market offering us. In 7 minutes we'll see a 15 minute fair value gap as well. So maybe तब तक ये कंसोलिडेट करे थोड़ा यहीं पे ही, फिर नीचे आए 15 मिनट से, फिर हमारे को एक मूव दे. We'll see what happens. I don't know, it's just the first inverse, so maybe I was waiting कि एक बार ये टैप कर ले, इसको भी ले ले, फिर यहाँ से मैं इसको नीचे खेल सकता हूँ. That is what I am thinking. That if this high right here gets taken out and I get this inverse setup from around like here, so I can target all the way to the downside. So that is what I'll be waiting. So let's see how does it play out. And अगर यहीं से ये नीचे आ जाता है तो well and good, we can maybe try to like continue the bullish structure to the upside. तो हम यहाँ से बाय की पोजीशन वापसी इस हाई को टारगेट कर सकते हैं अगर ये अभी हाई नहीं उठता है तो. There are two scenarios and we'll see what works best for us. So we see a downside move, and let's see what the market has to offer us. 5 minutes में हमारा लंदन ओपन होगा यहाँ पे as such. यार ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, दिस राइट हेयर. इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ये दिख रहा है. यहाँ मुझे पता है अभी इक्वलाइज बैठे हुए हैं, एज यू कैन सी. सिर्फ कितना $2 का फ़र्क है. So I really want this to be taken out by this high to be taken out, around 55 56 हम खेल सकते हैं इसको ऊपर. So I'll just see. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये हाई तो टेक हो चुका है, और यहाँ पे हमको अब पता लगेगा कि
ये हाई भी यहाँ पे टेक ओवर होगा मोस्ट प्रोबेबली, and then we'll get the second inverse. या फिर if this carries out and I see an inverse to the downside right here, I am entering it by, I have to take this short. This is such a good setup, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन मिल के अगर हम बुलिशनेस को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक द प्राइस विल गो प्रिटी मच लोअर, और मैं यहाँ पे $4-5 मूव में ही बुक कर लूँगा प्रॉफिट्स, मे बी अराउंड हियर. If I get an inverse at 44, I'll be taking my profits at 38. That is enough, I think. So maybe something like this. Because, bearish fair value gap, this is a BPR after liquidity sweep, balanced price range. So, मेरे हिसाब से this should work out, guys. Clear move to the downside. बट यहाँ पे ये inverse भी हो चुका है. I don't know, man. I think this is a good short entry. Liquidity sweep है. Yeah, I'll be taking this short entry right here. Yeah. Trade to break even. No, man. This is a clear, उड़ना चाहिए ये. इतना नीचे आ गया तो I want this 15-minute fair value gap to be tested. And that is where I'll be, getting my profits. Okay, so I see a clear spike to the downside. And break even, and boom, we are done for the day, guys. This is how we trade. This is how we short gold. And this is the only entry that I was thinking and that I took. This was not my real bias, but you know, maybe you have to sometimes follow your intuition. So I just followed my intuition. I knew कि भाई यहाँ पे इसने ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कह सकते हैं हम इसको, ये टेक डाउन करी, इसको स्वीप किया, यहाँ से हमारे पे क्लीन डिसरिस्पेक्ट देखने को मिला इस फेयर वैल्यू गैप का. तो दैट इज़ व्हेन आई नो दैट बुलिश स्ट्रक्चर राइट हेयर हैज़ बिन डिसरिस्पेक्टेड. अब प्राइस नीचे जाएगा, and that is when I placed the trade. I got my 1:1 risk to reward ratio, and that is up for the day, guys. Thank you so much for watching. This is Shadow XCU, and I'll just show you guys क्या किया हमने. ये किया है हमने. So yeah, it was 1:2 risk to reward ratio. बाद में हमारा risk यहाँ था, तो it is 1:2 only. Good risk, good trade for the day. And signing off, guys. See you. Subscribe to my channel. Bye bye.